सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट। ये हमारा जिरा का बेसिकली लैंडिंग पेज है हमारे प्रोजेक्ट के नेम प्रोजेक्ट क्रिएशन के बाद। यहाँ पे अब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आई विल गो टू द प्रोजेक्ट ऑप्शन और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर सर्विस मैनेजमेंट, फॉर वर्क मैनेजमेंट, फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मैनी 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 ऑप्शंस। जितना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मल्टीपल फीचर्स और प्रोजेक्ट ऑप्शंस नजर आएंगे। फॉर नाउ ऑन हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चूज करूंगी एंड हेयर यू कैन चूज इधर स्कैन बैन, इधर स्क्रम, इधर बग ट्रैकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कवरिंग like scrum part. I will select Scrum Project Management, and this will provide me the template with different options that are used in the Scrum software development, including Apex, creation of Apex, creation of user stories, bugs, tasks. तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जेरा का, जो कि हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है फॉर स्क्रम डेवलपमेंट अप्रोच। I will click on use template. For now on, I will use team managed project. Simply click on select a team managed, and here I need to give my project details and I will give my project name. My project name is e-commerce project, e-commerce shop प्रोजेक्ट। ओके, और अब आप देखें इट हैज जनरेटेड मी अ की, ECSP। अब ये की क्या करती है और इसका क्या काम है, वी विल एक्सप्लोर इट इन फर्दर। क्रिएट प्रोजेक्ट, आई एम नॉट कनेक्टिंग एनी रिपोजिटरी येट और एनी डॉक्यूमेंट्स। You can see कि हमारा एक project with e-commerce shop project has been created and it has given me the name of the board like with the key जो कि उससे generate हुई थी ECSP। ये की थ्रू आउट यूज होगी। हम जब हम अपनी यूजर स्टोरीज क्रिएट करेंगे, हम अपने एपिक्स क्रिएट करेंगे, तो हमारी जो प्री रिक्विजिट होगा उनका उन सब का जो प्री इनिशियल होगा वो होगा ECSP, टू सिग्निफाई कि ये यूजर स्टोरी या ये बोर्ड जो है ये किस प्रोजेक्ट का है। तो ये की उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हम अलग मैनेज नहीं कर रहे। हमने अपनी टीम को कैसे इन्वाइट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हेयर आई कैन क्रिएट टीम। आई कैन नेम माई टीम, आई कैन नेम माई टीम लाइक e-commerce, sorry, e-commerce team. Here I can like choose people but for first of all I have to invite people to my Jira प्लेटफॉर्म, और उसके बाद ही मैं उनको अपनी टीम के अंदर ऐड कर सकती हूँ। हेयर मुझे उनकी ईमेल्स देनी पड़ेंगी और ईमेल्स देने के बाद मैं अपनी टीम मेंबर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकती हूँ। फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आई एम टाइपिंग एन ईमेल। ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड। इट्स गिविंग मी या दिस इज माई ईमेल एड्रेस। तो उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी इफ आई ऐड दिस वन पर्सन। लेट्स ऐड सम मोर टीम मेंबर्स। सॉरी, आई विल लाइक ऐड, ठीक है। फॉर नाउ ऑन आई एम एडिंग दीज टू पीपल। Successfully added and the email have been sent to their accounts. When they will join my team, I will see my team members in this project और मैं उनको अपनी टीम के अंदर ऐड कर सकती हूँ। That's it for this tutorial. In the next step, we will cover, we'll explore all these features of the Jira, and I will tell you how these features are helpful in managing your project and your team with Jira. Let's meet in the next tutorial.